हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे एंड वी आर बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ गेंशिन इम्पैक्ट। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में चाइल्ड ने लॉर्ड ऑफ वर्टेक्स को जगा दिया था एंड हम लोगों ने उसे फाइट करके उसे हरा दिया, जिसमें कि बहुत बड़ा हाथ निंगवांग का था, जिसने अपने जीट चेम्बर को, जिसको उसने बहुत मेहनत से बनाया था, उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया एंड हमने लियो सिटी को सेव कर लिया था। सो इस वाले एपिसोड में जिस सेरेमनी का हम प्रिपेयर कर रहे थे जोंगली के साथ, फूल पत्ते इकट्ठा कर रहे थे यार, तो उसका यहाँ पर हमें चालू करना है प्रोग्राम को। बट यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलने जाना होगा जोंगली को। तो हमने लियो सिटी को तो सेव कर ही लिया था, बट अब लॉर्ड ऑफ जो जियो आर्कन थे उसे हमें फेयरवेल देना है। सो चलो फटाफट से चल के ढूंढते हैं जोंगली को। तो भाई जोंगली ऑब्वियस से बात है अपने पार्लर पे होगा। लेट्स सी, मीट हिम। Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zongli isn't here at the moment. It seems he अरे भाई जोंगली यहाँ पर नहीं है। नॉर्थन बैक्स, अच्छा वो फोर्टरी के बैंक में। Last time we Yep. saw Zongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. चलो भाई, बैंक आ गए हम, अब चलते हैं अंदर। वेट, व्हाट? चाइल्ड है जोंगली के साथ और वहां पे सिग्नोरा भी है। अरे भाई यही तो है जिसने वेंटी का वो जेनोसिस चुराया था। जोंगली लोगों के साथ क्या कर रहा है? And bring chaos to the land. I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zongli and Child. And you! You're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ पार्ट को स्किप करूँगा। Once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis. एग्रीमेंट क्या है भाई? What in the world are you talking about? सर, जिसको नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है लियो के शहर में, ये सब रेक्स लैपिस जो कि खुद जोंगली है, तो जो जियो आर्कन है वो जोंगली ही है, और इसने ही जो भी था इस सिग्नोरा के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तो इसने जीनोसिस देने का प्रॉमिस किया था, जो कि अब दे दे रहा। भाई जीनोसिस नहीं हुआ, खिलौना हो गया भाई, दिए जा रहे। सो कॉन्ट्रैक्ट दिया था जोंगली, बस टेस्ट करना चाहता था कि लोग कैसे मुसीबत से बाहर आते हैं, तो इसने ही सब कुछ करवाया था, जितना भी कुछ हुआ। The Gnosis to the Fatui. I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. For a fight? Be that as it may. You've come out. सो रेक्स लैपिस बोल रहा था कि अगर ये लोग उसको रोकने में फेल हो जाते तो रेक्स लैपिस खुद आके सब कुछ ठीक कर देता, लॉर्ड ऑफ वॉर्टेक्स को मार देता। बट उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो बहुत खुश है कि लोग मैच्योर हो गए और वो खुद अब जाके सब सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ जितना कुछ भी था सब जोंगली का एक प्लान था। Come, child. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Paimon can't. So Zongli, what sort of contract did you sign with the Cryo Archon? Paimon's so curious. One of the clauses of our contract was not. ओके, तो ये भी नहीं बताएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, नेवर माइंड। इसने हमें बोला कि जो तुम्हें आंसर्स है तुम्हारे आगे के जर्नी में मिल जाएंगे। सो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now.
हाँ पाइमन की बात तो एकदम सही है भाई। अब हम लोगों ने इतना टाइम लगाया इस सेरेमनी को रेडी करने के लिए, तो चलो चल के एक बार देख ही लेते हैं आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. The Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. तो भाई यहाँ पर चल क्या रहा है कि सबको चाइल्ड के ऊपर शक जा रहा है। वैसे शक क्या उसी ने ये सब किया है, बट नेवर माइंड यार। हाँ तो हम लोग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि निंगवोंग को कुछ अनाउंसमेंट करना है, तो लेट्स सी उसे क्या बोलना है। Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn Yes, to हर say चीज़ का एंड होता है एंड इसका भी Will एंड you होना चाहिए stand with एंड us हमें as आगे we बढ़ना चाहिए। reestablish our contracts, as we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. ओ भाई साहब नाइस। क्या मांग सकते हैं? कुछ मांगना सही रहेगा क्या? Well, could you help me put up some missing person posters? नाइस। यहाँ पर भी हमें सिस्टर को खोजने के लिए पोस्टर लगाने के लिए बोला है हमें। भाई एकदम ट्रैवलर एकदम इनोसेंस है, एकदम सही बात है भाई। ओ भाई ये रहे हमारे जोंगली भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। सब वहाँ पर भाई परेशान है और इसको देखो। Look at this. Everyone in Liyue वही is तो। caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis सब इतने again. सैड है भाई। And here you are looking all relaxed. वही। Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Xinyue kiosk. That sounds like big talk, Zongli. Paimon might have believed you if you were treating हाँ तो us पाइमन to ये some बोल रही है कि food अगर on वो कहीं knockout, सस्ते उस्ते में खिलाता तो कोई बात है, बट वो जो रेस्टोरेंट लेके जा रहा है वो बहुत महंगा है। और जोंगली अब तक यार हम लोग को कभी भी नहीं खिलाया है। अभी तक सब जगह हम ही लोग पे किए हैं। You're right. देखो भाई अभी भी ये बोल रहा है I इसके do पास like मोहरा the नहीं है। Mora. But why would Morax lack हाँ वही Mora? तो भाई ये गॉड As है। the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to... अच्छा तो जोंगली ऐसा बोल रहा है कि उसको पता था कि उसको ये सब छोड़ना है, इसलिए वो पहले से प्रैक्टिस कर रहा था। No wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to.
But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite. अरे भाई पाइमन फिर बेइज्जती कर रही है। तो ये बोल रही है कि ये पहले से इसलिए नहीं मोरा नहीं बना पा रहा था, इसलिए वो क्या वो एक पैरासाइट बन रहा है जो कि दूसरे लोगों के पैसों पे जीता है। We do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without parties. बात तो एकदम सही है भाई इसका। Paimon thinks that we should make a move and हाँ, अब continue हमें our अपने search for the जर्नी को seven. कंटिन्यू करना चाहिए एंड Fear that स्टैचू ऑफ continuing your 7 सारे journey गॉड्स को may be ढूंढना चाहिए। difficult. The nation that अरे neighbors भाई Liyue by इनाजुमा sea, भाई Inazuma, is फाइनली presently रेड इन के closed. सिटी जाएंगे अब हम लोग, जो कि Yes. क्लोज है बाय द वे, बट The nation has been आई नो closed जहाँ तक by है कि order हम लोग of किसी its न किसी तरह deity, पहुंच ही जाएंगे वहाँ the पे। Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. Yeah, boy. And since Raiden is Finally. also the Shogun of Inazuma, Raiden people call her Shogun. the Raiden Shogun. Now we can go to Inazuma. भाई बहुत कुछ खुलने वाला है Inazuma में, People at the फिशिंग wharf एंड ऑल were बहुत saying कुछ that खुल the जाएगा मेरा। situation in Inazuma is very tense. Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, सो विजन क्या है ना, विजन जिसको नहीं पता वो एक छोटा सा बैच जैसा रहता है जो कि नॉर्मल पीपल्स को दिया जाता है, जिसके बाद वो पावर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एलिमेंट्स कंट्रोल करते हैं ना हमारा ट्रैवलर, बट नॉर्मल पीपल वो नहीं कर सकते हैं एंड उनके पास अलग से एक एलिमेंट पावर रहता है जिससे वो स्पेशल पावर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि गॉड्स होने देते हैं, जैसे कि जोंगली हो गया एंड ऑल द गॉड्स। but starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away will only strengthen ओके, तो her लियो resolve एक to क्लोज pursue लेसन बन गया है, eternity. क्योंकि वहाँ पर एक Knowing her, विजन हंट डिग्री चल she रहा है must have जहाँ पर again रेडिन quoted शोगन that ने adage ऑर्डर she's दिया है most fond of जितने भी लोग when हैं सबसे proclaiming that विजन्स decree छीन to her लेने को people. और 7 उनको ideals for एक 7 स्टैचू पे लगा देने को, gods. क्योंकि उसे And of डर है कि these, कोई उसके eternity रेल्म को is हार्म ना करे। nearest unto the heavenly principles. सो गाइज यहाँ पर हमने जोंगली से बहुत सारी बातें की एंड बहुत कुछ पता किया, तो अब हमें किसी भी तरह इनाजुमा में जाने का रास्ता पता करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है हमारा लियुए का आई थिंक काम कंप्लीट हो चुका, बट शायद से हमें और कुछ एक नया क्वेस्ट है जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, लियुए का क्वेस्ट, और हमें इनाजुमा जाने का भी रास्ता ढूंढना होगा। सो गाइज आज की इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।